go. तो पहले मैं इंट्रोड्यूस थोड़ा ऐसे कर लेते हैं. ऐसे हम्म तो मुझे किधर देखना है, इधर या इधर? हम दोनों ही बात करेंगे, पर आप बीच बीच में आप ऐसे नॉर्मल देख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, थोड़ा तो डरने वाली फीलिंग लगनी है तो गीता को बुला लो सामने. नहीं मजा आएगा. मुझे तो इनसे डर लग रहा है. नहीं कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं. ओके या तो पहले मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ कि हेलो, वेलकम टू माय चैनल. दिस एपिसोड मच रिक्वेस्टेड. ठीक है. ओके वो पहले होगा ना गणपति को नहीं, गायत्री मंत्र. ओम भूर्भुवः शुरू करने दो. शुरू करो अंताक्षरी के लेकर हरि का नाम. Ready, let's go. So hi everyone, welcome back to my channel. Okay, rolling. I hope you have been enjoying the episode so far. This episode is a special one. It's the most requested episode. Like a lot of my friends here asked me to get my fufa, who's Mr. Amit. So he's my Hi. uncle. And yes, so finally I got him on the episode. He was a bit hesitant, but now I think he's ready to be on. Yeah, let's do it. Okay, so to begin with, I'll just let you guys know. So he lives in Dubai, and that's how like even I came to Dubai, because he was here. So there was always that support in the new country here. So you tell me, how was your first time in Dubai, and how was your journey? So basically, I first came to Dubai on 2nd of March 2006, and I landed at Terminal 3. And I do recall it was weather was quite good at the time, because March usually is a good in Dubai. So I didn't felt that weather thing at that particular month. So I came alone initially, because the organization which I joined was offering me a 1 month stay in a hotel, and I had to arrange for the flat and all the things. So I decided that maybe I will bring my kid and my wife once I get settled here in a 1 month's time or so, or maybe later. Initially, this is what I thought. But हुआ ये कि when I landed, and I stayed in a nearby place. This is called Imperial Suites. It's nearby in Mankul. So there was a batch of some 10-15 people who joined with me, and we joined Emirates Bank. Now it's Emirates NBD. Earlier that time it was Emirates Bank International. So I joined on I think 3rd or 4th of March, and then we had a training of 1 month. So I stayed in that Imperial Suites for a month. Then since it was first time I was staying away from my family, तो 1 महीने के अंदर ही मुझे लगा कि भाई अभी रहना मुश्किल है. And so I think by end of March I called Geeta, and Bhavi was only I think 2.5 years that time. Wow. So रोज शाम को यहाँ से निकल के फ्लैट ढूंढता था मैं. तो जैसे जैसे 1 महीने का पीरियड कंप्लीट होने वाला था, तो आई फाउंड दिस बिल्डिंग and I liked the place, because since I was staying there for long, so it gives a very homely feeling of it's like India. So then I took a flat in this for rent in this building, and then they both my kid and my wife and my father came by end of March 2006, and this is how my journey in Dubai started. And कब कितने साल के थे आप जब ये सब मतलब आपने सेटल किया था? Maybe 35. 35? Yeah. Wow. So it's been now almost 18 years now in Dubai, and since 18 years I am in this same building. It's just that I have changed from one block to another block. Initially we were having 1 bedroom, hall and kitchen flat. Now we have moved to 2 BHK, but that's the only difference which happened. Otherwise it has been all in the same building, same area, because it's a very family oriented building, and most of the people who were there at the time, or maybe joined later in 1 or 2 years, are still staying here. So the atmosphere is very good, and that's it. This is how my journey started. Now you might ask now that how come suddenly Dubai? हाँ वही मतलब like वो भी 35 के एज में जब Yeah, मोस्टली आप exactly. एक जगह पे ही वहीं पे कर इंडिया में ही थे. तो ये बहुत ही मतलब मेरा कोई प्लान नहीं था दुबई आने का as such. I was working for Industrial Development Bank of India, that is called IDBI Bank, and I was heading Ghaziabad branch. So I was at my place
with my parents, with my family, with my brothers and his family and all. So कभी मैंने सोचा नहीं था कि, और ये पता भी नहीं था मिडिल ईस्ट है क्या, मतलब दुबई क्या है, इतना इतना था नहीं, और तब दुबई इतना डेवलप था भी नहीं उस वक्त, इतना नाम नहीं था जैसे अभी बहुत फेमस है, तब ऐसा नहीं होता था। तो मुझे याद है, इट वाज आफ्टरनून in December 2005, and it was Sunday afternoon, and I was sleeping at the time. So it was around, if I recall, around 3:34 in the afternoon, and I got a call from a headhunter, and that lady asked me, that if there is opportunity and would you like to move to Dubai. So I was in Adi Neem sort of thing, I was half sleep, so I thought, okay, let's explore, let's see क्या है, देखते हैं। फॉरेन है तो फॉरेन का बड़ा उस वक्त क्रेज था, भी फॉरेन है तो पहले कभी फॉरेन गए नहीं थे उस वक्त तक, तो वो ऐसे ही ये सारा कुछ शुरू हुआ। तो उसके बाद मुझे याद है कि दिसंबर के बाद कुछ 15-20 दिन तक कुछ खबर नहीं आई। सीवी भी मैंने भेजा उस वक्त। तो जनवरी में हम लोग की मैरिज एनिवर्सरी होती है, तो जनवरी में मैंने सोचा कि घूम के आते हैं गोवा। तो मैं फैमिली के साथ, गीता, बबी, मम्मी, पापा, हम लोग गोवा की बुकिंग कर दी, गोवा चले गए। तो उसके बाद गोवा गए, तो गोवा में मैं पहुंचा तो उस कंसल्टेंट का मैसेज आया कि आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा दिल्ली में। So the process was that you have to first apply, you have to appear for 2 exams, and then there will be an interview, and then they will decide. So one exam will be there, then you have, if you qualify that, you have to go for the second one, and if you qualify for that as well, then you go for the final interview, and then they will tell you. और ये कौन सी फील्ड में था? Banking. It was again a bank here. उससे मतलब okay, finance basically. Finance, banking. So हम लोग गए वहाँ पे 2 दिन जो है गोवा घूम रहे थे, घूमते घूमते उसका मैसेज कि जी 2 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है दिल्ली में। मैं तो अपनी फैमिली के साथ गोवा आया हूँ, मैं तो आई कांट कट शॉर्ट माई ट्रिप, तो मैंने कहा और क्या ऑप्शन है। तो होता ये था कि यहाँ की जो पैनल होता था इंटरव्यूअर्स का, वो दुबई से ज़्यादा था इंडिया, तो दे हैड अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ विंडो, और टाइम, कि 2 दिन के अंदर दे हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स एंड गो बैक। तो मैं बोला कि आई कांट कम टू बैक टू दिल्ली बिकॉज आई एम इन मिडल ऑफ द वेकेशन। सो देन दे सेड ओके, वी हैव गॉट सिमिलर टेस्ट एंड इंटरव्यू इन दिल्ली, इन बॉम्बे एज वेल, सो विल इट बी पॉसिबल फॉर यू टू कम टू बॉम्बे। तो मैं कहा या दैट आई कैन डू, दैट आई कैन ट्राई, आई कैन स्नीक डे इन 1 डे टू बॉम्बे एंड आई कैन कम बैक। So this is how I went there. Then this exam happened. Then they told me that you cleared the first round, then the second round, and then the interview, and then I came back same day, middle of the night I was back. Then after 1 month they called me and said, you have been selected for this, and this is the date, and so this is how it happened. Like a leap of faith, I think you took कि गोवा वरना वेकेशन के बीच में कोई क्यों ही जाएगा। Exactly. So sometimes things fall in place. Whatever is destined to happen, things automatically get in place, and if it has to be a success, then things also get placed accordingly, in your life. तो कुछ जाने का नहीं था, दुबई आने का कुछ नहीं था, कोई सोचा नहीं था, ये भी पता नहीं था दुबई है क्या। अगर आप मिडिल ईस्ट की बात करते हो तो वो टाइम पे मिडिल ईस्ट में ये लगता था बहुत ही कंजर्वेटिव एरिया है। एक्चुअली मिडिल ईस्ट को, दुबई को और इन सबको हम लोग, जो भी हमारी लिमिटेड नॉलेज थी, क्योंकि नेट इतना नहीं होता था, वो सऊदी से लिंक्ड थी। तो इमेज जो बनी होती थी वो सऊदी की होती थी कि वो तो बड़ा स्ट्रिक्ट है वहाँ पे, तो ये है वहाँ पे, तो वो है। तो किसी और को भी इतना नहीं मालूम होता था, क्योंकि सब एक जैसे होते थे। तो हुआ ये कि मेरा एक दोस्त का दोस्त हम मेरे बैंक में ही था, ऑलरेडी काम कर चुका था। तो फिर उससे किसी तरीके से मैंने ईमेल पे या कॉल करके बात करी, तो नवीन सिंगल, अभी भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो, अभी वो सिंगापुर में है।
तो उसने मुझे को पूरी ईमेल पे सब बता दिया, भाई आटा कितने का मिलता है, दाल कितने की मिलती है, मकान का किराया कितना है, बच्चे के खर्चे कितने होते हैं, और क्या ये है क्या वो है, उसने मुझे पूरा एक्सप्लेन कर दिया। और सबसे फनी बात क्या हुई ना कि तो ये अप्रिसिएशन तो खत्म हो गया कि भाई दुबई सऊदी नहीं है, हाँ, ये तो मालूम चल हाँ, गया, बहुत अच्छा है, डेवलप होने वाला है, लोग भी अच्छे हैं, सब कुछ है, ये तो चीज़ क्लियर हो गई, मम्मी मम्मी को भी पापा को भी अप्रिसिएशन थे कि कहाँ जाओगे हाँ, ये वो थोड़ा बहुत क्लियर हो गया। अब मैं जब उतरा एयरपोर्ट से, तो फ्लाइट से जैसे ही मैं निकला, गेट से निकला जैसे ही क्राफ्ट एयरक्राफ्ट के, थोड़ा सा आगे चला तो मैंने बोला अपने आप से, हिंदी में बोला कि अब किधर जाना है, लाइक दैट, यू नो यू मतलब से किधर इट, जाना? यू स्पीक विद योरसेल्फ, किधर जाना, वेयर आई हैव टू गो नाउ। हम्म, तो एक जेनेटर टाइप था, एक एक्चुअली सफाई कर रहा था, बोला हम्म, सर आप सीधे जाके राइट मुड़ जाओ। वो हिंद मैं उसको देख रहा है, मैंने कहा ये हिंदी बोल रहा है। तो एक आइस तो ब्रेक तब हुई कि जब आपको आपकी लैंग्वेज में बात करने वाले लोग मिलते हैं, और वो भी एयरपोर्ट जैसी जगह पे, और जब आप एंटर करते हैं कंट्री में, तो एक आपको थोड़ा एक फेमिलियरिटी सेंस आता है कि सेंस ऑफ कामनेस आता है, एक आप you feel good, and you feel secured, and you feel better, you know that I am in a place where things are not that strange, हाँ, तो थोड़ा which फेमिलियरिटी आ exactly। जाती है। तो वो आया, फिर उसके बाद जिस एरिया में मैं रुका था ट्रेनिंग में, वो सोच लीजिए कि मिनी इंडिया, अभी भी मिनी इंडिया ही है वो। बाहर निकलो तो हिंदी बोल रहे हैं, खाना इंडियन, और जो हमारे साथ ग्रुप था वो भी, उसमें भी सारे इंडिया से आए थे। तो फिर धीरे ये लगा कि हाँ भाई ये तो कोई ऐसी सुना था वैसे है नहीं, ये एक अलग देश है, और यूएई एक अलग देश है, यूएई के लॉज अलग हैं, यूएई के लोग अलग हैं, और बहुत अच्छे लोग हैं। और बुर्ज खलीफा तब 10th या 11th फ्लोर था जब मैं आया था, बुर्ज खलीफा बन रहा था उस वक्त। मरीना जहाँ तुम रह रहे हो अभी, और जेएलटी, इस पे कुछ काम शुरू होना हुआ था, अदरवाइज पूरा खाली एरिया था। वर्षा जो है अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो सिलिकॉन बन रहा था। हाँ, वो तो अभी भी बन रहा है। हाँ, तो ये सारे डेवलपमेंट, ये अच्छा लगता है देख के कि भाई आपके सामने जो इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े लैंडमार्क्स हैं, वो आपके सामने बढ़ रहे हैं। अच्छा, बुरा भी लगता है कि आप बूढ़े होते जा रहे हो, इतना टाइम निकल गया। हाँ, तब so बनते। so so this gives you a feeling that you belong to this place, because you see the development happening, like just like you see your child growing in front of you, you see the city growing in front of you, you feel more connected, and you feel more veteran of that place. So that connects you with the place, actually, this type of feelings, this type of experience in any of the cities. So this was the journey which I can say brought me from India to a new place or a new city altogether. That was my first overseas trip, ना, to वो Dubai. फर्स्ट यही थी दुबई, है ना? पहली बार दुबई आया मैं, फर्स्ट टाइम to any country in the world. ओ वाह, मेरी भी पहली दुबई ही थी। आई थिंक मोस्टली इंडियंस की अब वैसे पहली ट्रिप दुबई ही होती है। आई थिंक ईज ऑफ एक्सेस की वजह से ईज ऑफ भी। एक्सेस है, और ये भी है कि इंडिया तो आप कभी भी घूम लो, तो ये चलो फॉरेन घूम के आते हैं, तो वो फॉरेन का जो एक क्रेज है लोगों का अभी है, और इसलिए, और एक्सेसिबिलिटी बहुत हो गई है, कॉस्ट भी कोई इतना फर्क नहीं है, तो लोग थाईलैंड जाते हैं, लोग दुबई आते हैं, तो it's much easier than going to US or UK. So the middle class market, which is in India, upper middle class or middle class, now they have lot many avenues to go. True. Thailand youngster will prefer, maybe they'll not try to go with families, तो bachelor but trips yeah, away. but if you want to go with a family, then obviously you think about Dubai, Singapore, and Hong Kong. So all these things, and it's very close. This is another factor which attracts Dubai to many फैमिली Indians. ओरिएंटेड लोगों को भी It's very close. Like it's 3 hours, you reach Delhi. 2.5 hours, you reach Bombay. So it's just like going from Chennai to Delhi. It will again take 3 hours. So that is so this is just an extension of India now, Dubai. So this was my journey till now, in how I came to Dubai. एंड जब उस टाइम पे व्हेन यू वर लीविंग द कंट्री, सो लाइक हाँ, कितना लाइक व्हाट परसेंटेज ऑफ स्कैर्ड, या कितना क्या क्या इमोशन थे आपके? लाइक डर भी होगा या कुछ थोड़ा एक्साइटमेंट भी होगी, और आपके फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था, जैसे जो आपने बताया होगा? और तो फ्रेंड्स का बड़ा अच्छा रिएक्शन था, इनफैक्ट फ्रेंड्स एज सच नहीं देखे, जब व्हेन यू आर इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, सो जो फ्रेंड्स तो होते हैं वो तो कॉलेज टाइम के होते हैं, तो उसके बाद तो फ्रेंड्स तो नहीं होते, कलीग्स होते हैं, ठीक है।
तो कलीग्स जो होते हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग था. तो IDBI Bank, I was heading Ghaziabad branch. Ghaziabad is a small city, for those who don't know, is a small city in Okay. Uttar Pradesh, and it comes in the national capital region of Delhi. And so we have Noida as well. So I had a colleague who was working in Noida branch, and he was very senior to me, and he was a State Bank of India probationary officer as well, if I'm rightly remembering, and SBI OP or SBI, something of that sort. And he was heading Noida branch, and the regional head of my bank was was also with me in my previous organization. So I knew him beforehand. So Mr. Brij Mohan Sharma, he's a very gem of the person. I'm still in touch with him. So what happened that I was on vacation, so nobody knew that I was selected, and I even appeared for that. But there were people from my organization who appeared into Delhi round of interviews, For the and same. they saw people coming from other banks and IDBI and all, so they knew. So suddenly, what happened when I was selected in Fab, I think that now you need to come to Dubai, and I was thinking of resigning. Suddenly, I heard that Noida branch had resigned. So I was wondering. I said, and I went to the branch in Noida for a meeting and all. So I asked Sanjeev sir, what happened? Why did you resign? No, no, no. I've got some other opportunity. I'm going somewhere. So I said, okay, good, very good. So then I told him, I said, I am also thinking to resign. Maybe I'll resign today once I'm back. I am not resigning because today you resigned, and we both fall under Mr. Brijmohan Sharma. So I don't want to give him shock, two shocks in a day. In a day or two, I'll resign. So he asked me, where are you going? So I said, I'm going to Emirates and Emirates Bank, Dubai. I don't hide things. I am. I don't feel that I should hide anything because these things people will come to know. So he said, oh, I'm also going. Where did you give the? I never saw you in the interview. So I said, no, no, no. I was in Bombay and I give there. So he was shocked. He said, okay. So uske baad, then I came back after 2 days and I also resigned. So this is very funny thing, which happened. And usually I have seen this in corporate world, when people they don't tend to tell you, where they are going and all. And they come up with some stories thinking I've got 3 offers, 4 offers. I will tell you, but I don't believe in all this. Whenever I've resigned, I first hand told, this is where I'm going and this is what I've planned and all these things. So this is one funny thing, which I still remember, that this is what happened. Wow. And then let's say corporate world, you have full life experience in the corporate life, है ना, जैसे आपको सब पता है इतने टाइम से आप काम कर रहे हो. So what is have you ever thought of starting your own business ever कभी कि मतलब क्योंकि corporate में तो चलो इतना और भी होता है, कभी आया दिमाग में कि वो maybe I'll start? Because see, everybody is been given with the certain skill and gifts, which they can be best suited for. Now, as far as I'm concerned, I prefer to do a job rather than doing my own business, because somehow I feel that there's a lot of uncertainty in business, So I want to avoid that. I'm a type of guy who will go steady, sort of career graph. And so entrepreneurship is not everybody's cup of tea. And then there are phases in life where you can try these things, and there are times when you have to go steady with your life. So till now, I don't think I have come to that stage that I can leave my corporate job and I can take this type of decision, and go in and venture into uncertainty. So, and second, the things which I like I like traveling, I like planning travels, So maybe when I am out of this, I can think of doing something related to that, but not now. Maybe later, Yes. Wow, हाँ काफी exciting होगा but at ये. least not for next 2-3 years, 4 years. And also now that you said that you travel so much, so what's your favorite destination, travel destination? India. India के अलावा, apart from India, any other country? See, so there are a couple of places which are on my bucket list and I've not done yet.
I like history, so I'll try to visit Egypt. Hmm. You know, Prague is one city which I liked. So I don't like those flashy cities and all. Like I don't like US. It's in New York I type. don't like that. I like the nature more. I Hmm. like history more. So Canada is good place to go if you Hmm. like nature. Switzerland I liked a lot. Uh, but if you ask me that if I would like to stay more than 10 days in any of these places, no. Huh. Yeah. 7 days is maximum I can stay, and then Italy is also is one place which I liked, especially Capri and Rome, because again Rome is history, and so one place is Egypt, which I want to go, someday, and that's it. But I like India more because India is amalgamation of so many countries, Every हाँ उस वहाँ पे नेचर भी मिल Yeah. जाएगा सब कुछ है आपको आपके सिटी भी पास, मिल सबके पास है, जाएगी. और सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है ट्रैवल में, खाना बहुत ज़रूरी है, इंडियन. Yes, yes, yes. सो आई डोंट ईट नॉन वेज, Hmm. सो मेरी फूड चॉइसेस लिमिटेड है. Hmm. अगर आपका खाना ढंग से नहीं हो रहा है तो घूमना बेकार है फिर. हाँ, true. तो अगर आप पूरे दिन घूम के आते हो, और इंडियंस का घूमना पता है ना कि मैक्सिमम यू कवर, हाँ. unlike Europeans or British Goras and all, they just go, they just relax, they just chill out in हाँ, one हम तो place for 10 days. explore वगैरह करते We see 10 places in one day. हैं. हाँ. So when you come back at the end of the day, then you don't get good Indian food, then I'm done. So I would like to go a place which is good, natural place, antiquity is there, old charm is there, and then food is also there. हाँ. Wow. And college में did you take any trips ever in India? कभी like जैसे friend trips नहीं होते जैसे. So कॉलेज में, अब चलो मैं स्कूल से शुरू करता हूँ. कॉलेज तो हाँ school. तो मेरे फादर की, माय फादर was in state government job. So he was into technical education, and since being in technical education in state government, he was transferred to different places. So the only stable time in my career, in my life, which happened, that I stayed in Jhansi from when I was 2 years till I was 14 years. So the 12 period was the only years period is the only period in my life, studies actually, in academics, that I was in one place for such a longer period. So I left Jhansi when I was in 8th. I started my 8th and then my father got transferred. So 8th I did from Bijnor. 9th I did from Bijnor. Bijnor again is a small town and near Meerut. 10th I did from Kanpur. 11th, 12th I did from Khurja. And then I did a graduation again from Bijnor. So it was very scattered academically, my tenure and studies, So then when you make friends, and this is what I have seen in my life, I don't know whether it is same with you guys nowadays or not, because you tend to make friends only after grade 8 onwards. So there are two type of friends, whether one are those which are your college friends and one are school friends. So school friends, they usually starts from 8th, 9th, 10th, 11th, 12th. Then you meet college people, could be possibly they could be with you in college as well, but college usually people go different places. So you get new set of people. तो अनफॉर्चुनेटली वो 8th 9th 10th 11th 12th मेरे जो ऐसे कंटिन्यूटी वाले दोस्त नहीं मिले, जो एक ही 4 साल. बट अच्छी चीज़ ये हुई कि 8th में मेरे दोस्त बने, वो मेरे दोस्त आज तक हैं. 9th 10th में मेरे जो दोस्त बने, वो उनके साथ मेरा आज तक टच है. 11th 12th में नई जगह गया था, नए दोस्त बने, वो मेरे साथ आज तक हैं. कॉलेज में जो दोस्त बने, वो दोस्त कुछ जो थे वो मेरे 9th 10th वाले थे, बिकॉज आई केम बैक टू दैट सिटी अगेन. तो वो भी मेरे दोस्त आज तक हैं. और फिर आपके दोस्त बनते हैं आपके कैरियर में. तो दैट वे आई फील ब्लेस्ड दैट इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज दैट दो आई हैव टू move to so many schools and colleges, people might take it otherwise, that we did not got any stability and it was so challenging to make new place, friends. new school, new teacher. Yes, it was very challenging. But one thing you learn is adaptability, how quick you get attached with the place and people.
that gives you that strength Yeah. to adopt yourself and change, which is, I think, is very important. Because if you stay in one place, then you don't change, you just How it would have continue with started. that. Yeah. So that one thing, good thing happened with me, that I learned a lot of fast changing environment, how to adaptable, how to suit myself with that, how to adjust myself with that, and to have people, and friends, which I still cherish. So this is the school and college journey. Now Bijnor is a very small place. Bijnor means maybe in 3 kilometers you can walk the entire city. And all the professors knew my father well. So they know whether I'm in the class or not. So, and my home was walking distance from my college. So just I used to go walking, or maybe I had a hero book that time. Just 2-3 minutes maximum. So if class is there of chemistry and I don't go, then my professor used to tell, Your सिंह father. साहब आज आपका बच्चा नहीं आया, क्या हो गया? तो father used to tell me, आज गए नहीं. तो ये फायदा है, नुकसान दोनों चीज़ें हैं इसमें, ठीक है. तो छोटा शहर है, सब एक दूसरे को जानते हैं ना, तो एडवेंचर करने की जो कॉलेज लाइफ में होता है वो नहीं मिला. और दूसरी सबसे अच्छी चीज़ ये थी, मतलब फनी चीज़ थी, अभी आई डोंट नो हाउ यू विल टेक दैट, कि मैं जिस क्लास में स्कूल में पढ़ता था इन बिजनौर, देयर वाज अ कोएड स्कूल, सेंट मैरीज, अभी भी है. तो मेरे साथ लड़कियां थी क्लास में. मैं पहली बार ऑल बॉयज से, एट्थ तक ऑल बॉयज था, एट्थ स्टार्टिंग तक ऑल बॉयज. क्राइस्ट द किंग कॉलेज झांसी वाज ऑल बॉयज, स्टिल इट इज ऑल बॉयज. वहाँ पे लड़कियां 11th 12th में आती थी. अच्छा. क्योंकि जो उसकी सिस्टर कंसर्न थी सेंट फ्रांसिस 10th तक ऑल गर्ल्स थी, और 11th 12th में ICSE बोर्ड में लड़कियां क्राइस्ट द किंग कॉलेज आती थी. तो हमारे यहाँ के लड़के जो थे वो 11th में लड़कियों को देखते थे पहली बार. मैं 8th में ही आ गया था, और जैसे ही मैं आया तो that was co-ed, and the size of class was very small, some 18 guys or 19. Some I remember around 11 were girls and 8 were boys, something of that sort. तो हमारी एक दूर की कजिन, जो मेरे फादर की सिस्टर लगती थी, मतलब उसकी मेरी एज की थी उनकी लड़की, वो मेरे फादर की सिस्टर लगती थी. अच्छा. मतलब मेरी बुआ लगती थी. हाँ. वो, और मेरे साथ पढ़ती थी वो. हाँ, तो उसकी दो जो गीतू नाम था उसका, गीतिका, उसकी 2 सिस्टर्स थी. एक उससे 2 साल छोटी थी और दूसरी 2 साल और उससे. तो एक 4th में थी, एक 6th में थी, एक 8th में थी. तो हमारे वो रिलेटिव थे, तो किसी को जानते नहीं थे. तो मैं मिला उसको, तो मालूम चला वो भी इसी क्लास में, स्कूल जाने से एक दिन पहले, जब 2 दिन पहले. तो जब मैं पहुंचा तो फिर ये हुआ एंड में कि मैं सारी लड़कियां मेरी बुआ हो गई क्लास की. वो सारी जो लड़कियां थी क्लासमेट हमारी, वो मुझे बोलती थी कि भाई हम भी तुम्हारी बुआ हैं. अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है. और जो छोटी वाली थी सबसे कोमल, जो 4th में थी, अब तो सब बड़े बड़े हो गए. कोमल मिली भी हो तुम मुझसे, कोमल जो आई थी US से. अच्छा. अच्छा. ओके, ठीक है. वो तो सबसे छोटी वाली थी. तो वो तो मेरे को पूरा बॉसी तरीके से बोलती थी कि मैं तेरी बुआ हूँ क्लास में. तो 8th में रहा मैं, फिर मैं 9th में दूसरे कॉलेज में शिफ्ट हो गया था. तो हुआ क्या कि जब जो उस वक्त हमारे साथ लड़कियां थी, तो जब मैं कॉलेज में गया तो ऑब्वियसली सब बड़ी हो गई. तो मैं उनको पहले से ही जानता था. तो बिजनौर बहुत कंजर्वेटिव जगह है, वहाँ पे ऐसा लड़के लड़कियां इतना ज़्यादा मिक्सअप नहीं होते. एंड तो बट वो जो ना दूर से कि ये मेरी वाली, वो तेरी वाली, ऐसे वाला कल्चर था वहाँ पे. अभी तो अब तो बहुत खुल गया, उसकी बात बता रहा हूँ. तो मैं उन लोगों को पहले ही जानता, तो मेरे लिए वो कोई नई नहीं थी. तो मैं उनके साथ वैसे ही बिंदास था. उनके घर जाता था, वो मेरे घर आती थी. तो मेरा नाम बिजनौर में बहुत हो गया इस चक्कर में कि भाई ये तो जो है बहुत, इसकी तो फ्रेंड्स बहुत लड़के भी होते थे मेरे दोस्त. तो वो जो पहले मेरे साथ थे वो लड़के भी आ गए, तो वो भी मेरे दोस्त होते थे. तो जो है ये मेरे को बेनिफिट मिला नेक्स्ट टाइम कि मैं वहाँ पे जब लोगों से मिला तो उनको मैं पहले से जानता था. बट नाम ये हो गया कि भाई ये तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स. सो ये एक बिजनौर के साथ लिंक्ड चीज़ें हैं. और कॉलेज की तरह नहीं रहा. और
कॉलेज ऐसा ज़्यादा रहा कि आप स्कूल में ही हैं, हाँ, क्योंकि छोटी जगह है। same. तो एक बहुत अच्छा इंसिडेंस हुआ हमारे साथ। तो ये जो मैं बता रहा हूँ, सोनाली है जैसे, वो भी कनाडा में है, वो मेरे साथ थी। और साजन करके मेरा फ्रेंड है, वो बिजनौर में है अभी। और एक और हमारी फ्रेंड थी शालिनी। तो क्या हुआ कि हम लोग ने एक दिन सोचा, अच्छा हम इन सब के घर जाते रहते थे, हमारे घर आते रहते थे। तो हमारे दोस्तों ने, साजन ने साजन ने जो मेरा दोस्त था, उसके पास वो उस टाइम पे उसके पास मारुति वैन होती थी। तो उसकी आंटी वगैरह देहरादून में रहती थी, तो वो बोला कि चलो जो है मसूरी चलते हैं घूमने। तो जो हमारे साथी हैं शिवानी और शालिनी और सोनाली वगैरह, तो हम बोले चलो चलते हैं। तो हम लोग बैठ के चले गए गाड़ी में, सुबह सुबह घर वालों को बताते जा रहे हैं, सब बता के पूरा प्रॉपर, यहाँ जा रहे हैं, इसके साथ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, ठीक है। अब चले गए और मसूरी में घूम फिर के आ गए। आके देहरादून में रुके रात में, शाम को। तो ये हुआ कि जो वापस चलते हैं, तो साजन बोला, उसकी मौसी वगैरह बोली नहीं रुक जाओ रात में। तो हमने बोला कि नहीं नहीं नहीं, हम लोग वापस जाएंगे रात में, बिकॉज गर्ल्स बोल के नहीं आई हैं कि ओवरनाइट स्टे करनी है, तो हम लोग को जाना है वापस। तो खाना वाना खाते खाते 8 साढ़े 8 बज गए शाम को। तो बिजनौर का रास्ता देहरादून से थोड़ा जंगल में होके जाता है। तो हम 8 बजे निकले। अब मैं, I was the coordinator of that trip because I was the one who took permission from their girls' families and all. So I was worried. I said this was time of, we were supposed to be back in Bijnor and we have not even started from Dehradun. So it's gonna be midnight. So somehow we telephoned from my friend's auntie's place to my parents that we will be starting soon and we might be late. In fact, we were not able to get the connection, telephone connection. So we told auntie to call my place and tell them that we might be late. And there were some issues in the telephone exchange and they were not able to connect. So we had this another fear, that we are not able to connect families and they don't know and they must be worried, blah blah blah. Somehow we started. Now in middle of the night, around 1:30, when we were passing from that jungle, Sergeant stopped the car in between and saying, listen, I can't drive more, I am sleeping. 32 years old incident, which is still etched in my brain. We have seen era of letters. We have seen eras of TV, which have got a big antenna. If you are writing a letter, it is not like a chat GPT has drafted a love letter for you and you send it. I wonder that maybe after 50 years, will they ever know that what is a friendship also? So is there anything you want to change in the current generation? Anything which you think you could change? Anything you'd like to change?